हेलो स्टूडेंट्स आगु आम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स थ्योरी पढ़ी आज किसी प्रॉब्लम वर्कआउट करवा एग्जांपल 1 ए 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज with a 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटर across a 6 volt battery. What is the equivalent capacitance of this combination? Find the charge on each capacitor and find the potential difference across each capacitor. Solution: 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर एवं 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटर सीरीज कनेक्शन है 6 वोल्ट बैटरी सहित 10 माइक्रोफैराड another is 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटर सीरीज कनेक्शन है एवं अप्लाई है 6 volt battery. So what is the equivalent capacitance of this combination? First, 10 microfarad and 20 microfarad are connected in series. So equivalent capacitance is given by 1 by C equal to 1 by C1 plus 1 by C2, or C equal to, so 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. So C1 into C2, C2 plus C1 by C1 into C2, or C equal to C1 into C2 by C1 plus C2. So here C1 is 10 microfarad, 10 microfarad into C2 is 20 microfarad divided by 10 microfarad plus 20 microfarad. So this is 200 by 20 plus 10, that is 30. So 20 by 3 microfarad. So this is 6.67 microfarad. Next, find the charge on each capacitor. जेहेतु ये सीरीज कनेक्शन तेणु चार्ज प्रत्येक कैपेसिटर समान रहिबो. So C equal to Q by V or Q equal to CV. C into V. So C is 20 by 3 microfarad into V is 6 volt. So that is 40 microcoulomb. Then C, find the potential difference across each capacitor. Potential difference across 10 microfarad is V1, that is equal to charge is Q by capacitance is C1, Q by C1. So Q is 40 microcoulomb divided by C1 is 10 microfarad. So this is 4 volt. And potential difference across 20 microfarad is V2, that is equal to Q by C2. So Q is 40 microcoulomb divided by C2 is 20 microfarad. So this is equal to 2 volt. Then 10 microfarad है 4 volt, 20 है 2 volt. 4 plus 2 equal to 6. तो applied potential difference है 6 volt. Then share है 4 volt एवं 2 volt. So this is the answer. Next problem. Example 2. A 10 microfarad and 20 microfarad capacitors are connected in parallel across a 6 volt battery. What is the equivalent capacitance of this combination? B. What is the potential difference across each capacitor? C. Find the charge on each capacitor. Solution: ये दुटा कैपेसिटर पैरेलल कनेक्शन है 10 माइक्रोफैराड and 20 माइक्रोफैराड. Battery 6 volt. So first we have to find the equivalent capacitance. Parallel connection the equivalent capacitance C equal to C1 plus C2. C1 है 10 microfarad plus 20 microfarad. So this is equal to 30 microfarad. B. What is the potential difference across each
कैपेसिटर प्रत्येक कैपेसिटर उपरे पोटेंशियल डिफरेंस समान हो अप्लाइड पोटेंशियल 6 वोल्ट तेणु 20 माइक्रोफैराड रे 6 वोल्ट हो एवं 10 माइक्रोफैराड रे 6 वोल्ट हो तेणु आंसर इज 6 वोल्ट सी फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर चार्ज अलग हो so charge on 10 microfarad suppose this is q1 c equal to q by v q equal to cv so capacitance c1 v is same so c1 is 10 microfarad into v is that is 6 volt so that is equal to 60 and it have a micro coulomb q2 charge on 20 microfarad capacitor so that is c2 is 20 microfarad v is that is 6 volt so that is 120 micro coulomb so this is the answer next problem a 1 microfarad capacitor is connected in parallel with a 20 microfarad capacitor and the combination is connected in series with a 6 microfarad capacitor what is the equivalent capacitance of this combination 1 microfarad 2 microfarad capacitor parallel connection is it is 1 microfarad here 2 microfarad series connection 6 microfarad 6 microfarad कनेक्ट कराई एवं ये दुटा टर्मिनाल मध्य बैटरी कनेक्शन हम सपोज दिस इज पी एंड दिस इज एन ये अप्लाइड पोटेंशियल बर्तमान यार इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस केते प्रथमे 1 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड ये दुटा पैरेलल कनेक्शन है तेणु 1 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड रा प्रथमे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बाहर करबो पड़िबो equivalent capacitance of 1 microfarad and 2 microfarad capacitors is that is या कुछ नाम देबा मन C1 या को नाम देबा C2 तो या को नाम देबा C3 तो बर्तन को सिंबल दे करी C12 so this is equal to C1 plus C2 so this is equal to 1 microfarad plus 2 microfarad कहीं दुटा से पैरेलल कनेक्शन अच्छी तेणु दुटा आड हो so this is equal to 3 microfarad बर्तमान ये कॉम्बिनेशन को आम ए रकम रिप्रेजेंट कर परिबे एटा को C12 लिखिबे एवं आर कैपेसिटर एटा होची C3 ये दुटा बर्तमान ए पॉइंट P एटा N ये दुटा बर्तमान सीरीज कनेक्शन तेणु सीरीज कनेक्शन ले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट equivalence equivalent capacitance C is given by 1 by C equal to 1 by C12 plus 1 by C3 so this is equal to 1 by 3 microfarad this is 3 microfarad plus 1 by C3 is 6 microfarad so 1 by 6 microfarad so this is 6 2 plus 1 this is microfarad inverse so that is half microfarad inverse so C equal to 2 microfarad this is the answer next problem a 3 microfarad and 6 microfarad capacitors are connected in series and the combination is connected in parallel with an 8 microfarad capacitor what is the equivalent capacitance of this combination
solution 3 microfarad এবং 6 microfarad capacitor ଗୋଟେ series connection ହେଇଛି suppose this C1 equal to 3 microfarad C2 equal to 6 microfarad. These two are connected in series and it is connected in parallel to, suppose this is your C3, that is 8 microfarad. So it has the situation 3 microfarad 6 microfarad series এবং এটা C3 সହିତ parallel connection है। तो बर्तमान प्रथम बाहर करियो पड़ियो C1 और C2 जो सीरीज कनेक्शन है तार इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस केते इक्विवेलेंट capacitance of 3 microfarad and 6 microfarad is that is C12, that is equal to product rule is that is product C1 C2 by C1 plus C2 जेहेतु एटा सीरीज कनेक्शन दीटे तेणु एटा तार फार्मूला प्रोडक्ट बाय सम सो 3 microfarad into 6 microfarad divided by 3 microfarad plus 6 microfarad, so this is equal to 18 divided by 9 microfarad, so that is 2 microfarad. बर्तमान C12 एवं C3 ये दुटा होची बर्तमान parallel connection C12 at 2 microfarad and C3 होची 8 microfarad. This is 8 microfarad. So equivalent capacitance of 2 microfarad and 8 microfarad is, that is C equal to, that is C12 plus C3, so 2 microfarad plus 8 microfarad, this is equal to 10 microfarad. This is the answer. Next problem, for the arrangement of capacitors shown in figure find the equivalent capacitance. मन कर पॉइंट ए पॉइंट पी एटा एस लिखिबे एवं एटा होची बी बर्तमान हमको बाहर करू पड़ियो ए बी मध्य इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस केते प्रत्येक कैपेसिटर रो कैपेसिटेंस ना समान सी एटा देखा होची सीरीज कनेक्शन टाइप रो किंतु प्रकृत एटा सीरीज कनेक्शन नो एटा होची पैरेलल कनेक्शन केमिति ना इटी ए और एस है कॉमन तेणु बर्तमान ये जो ए एस ये जो फर्स्ट कैपेसिटर रो पॉजिटिव प्लेट तापरे सेकंड कैपेसिटर गोटे प्लेट एवं थर्ड कैपेसिटर गोटे प्लेट माने तीनटा कैपेसिटर तीनटा प्लेट गोटे पॉइंट कनेक्शन है ठीक है तमने ए और एस सहित तीनटा कैपेसिटर तीनटा प्लेट कनेक्शन है सेमिति पी सहित पी और बी कॉमन तेणु कैपेसिटर अदर प्लेट्स पी रे कनेक्शन है पी किंबा बी सहित कनेक्शन है तेणु गोटे कैपेसिटर तीनटा प्लेट गोटे पॉइंट रे एवं अदर तीनटा प्लेट्स आ गोटे पॉइंट रे कनेक्शन है तमने एटला पैरेलल्स द कैपेसिटर्स एंड पैरेलल्स the capacitors are connected in parallel so equivalent capacitance is, that is C plus C plus C, that is equal to 3C. So this is the answer.